अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जिसे देश की जनता चुनेगी। और इसी कानून को लागू करने के लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया, जो हमारे देशवासियों को आजादी से मिलने वाली उनके अधिकारों को सुनिश्चित करती है। Supreme sacrifice in service to the nation. The celebration of Republic Day is going to be a bit different from the past due to pandemic situation. Let us leave 2021 behind and strive to take India to new heights in 2022. A very patriotic afternoon, respected principal sir, cherished faculty members, and my dear fellow mates. We are here celebrating 73rd Republic Day of India. I, Anupama, on behalf of Risers Club of RRSDCE, welcome you all in today's event. Now, I take this opportunity to ask our principal sir to speak a few lines of motivation. I am very much delighted to see you are all engaged in this program, and this is very good. I always appreciate this kind of program. It must be celebrated in our institute. We are lacking these things, so this is very good, and I hope everybody should participate in this such kind of this program, so that hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Today is a special day. Today is we are celebrating Republic Day, 73rd Republic Day, and we have started this kind of motivational program. So this is very good. I appreciate you all. Go on and continue this kind of activities regularly, and I hope you must encourage your students, your colleagues to take participate in this event like this. Okay. Hello. Thank you, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you, sir, for your motivating words. We are glad that you joined with us. Always, I would always like such programs. Okay, go on. Actually, just tell me what is your program today? What are you going to do right now? Sir, yes, sir. So we are going to first of all, there are two events in today's session. One is going to be speech. The students of first semester, that means our juniors, they are going to express their thoughts about various constitutional rights. Fundamental. Okay. We are having 7 fundamental rights. So they are going to perceive themselves as those rights and express themselves. That will be the first round, and in the second round, we are going to hold group discussions. There are 4 groups, and there are 3 to 4 students in each group, and they are going to just have a peaceful discussion. It's not kind of debate, it's just a peaceful discussion. They're going to discuss among themselves group wise that what they think upon the given topic. The topics are given to them, so they will discuss on this. Topics have been So given. if you are staying with us, topics have been given already. yes sir, we have. Yes, Okay, sir. okay, very good. Yes, sir, we have given them topics. Then it's okay. Okay, yes. Thank you. नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अजीत कुमार 2020 बैच से आप सभी का राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के राइजर्स क्लब द्वारा आयोजित फैंसी स्पीच कंपटीशन एवं राउंड टेबल डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे संविधान द्वारा दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में स्पीच के फॉर्म में जानेंगे, जिसे हमारे प्रतिभागी एक अलग एवं अनूठे अंदाज में पेश करेंगे। तो समय की नजाकत को समझते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा मिसेज सालू को, जो हमारे कॉलेज की ट्रिपल ई की 2021 बैच की छात्रा है। मिसेज सालू, माइक इज योर्स। Most honorable principal sir, respected teachers, galaxy of seniors, and all my hottest girls and guys.
First of all, a glorious namaskar to all of you. It's a matter of greatest joy and consolation that we all are assembled here to celebrate 73rd Republic Day of India, and I have been provided such a marvelous opportunity to act as right to equality. For today, I am right to equality of Magna Carta of our Constitution, that is fundamental right. Friends, I have 5 parts. Every part of me has its own significance in the life of every individual of our nation. First one is equality before law and equal protection of law, that is Article 14. It means that either men or women, rich or poor, black or white, everyone is equal before law. I know it is not absolute and there are some constitutional and other exceptions to it. For example, immunity to governor and president regarding their arrest and so on. Now, I will move toward my second part that is very close to my heart. Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, and place of birth. That is Article 15. It means that we can't make an adverse distinction on the ground of any type of inequality and differences regarding religion, race, means black and white differences, caste, to protect the interest of every caste, reservation of OBC, STSCs in employment and education, help them to fight against discrimination. And 103rd Amendment Act 2019 EWS reservation also helped economically backward section of society in upliftment. Prohibition regarding discrimination on the basis of sex. Our Bihar government has taken very crucial step of horizontal reservation, which means reservation provided to women in different fields like education, employment, and in Panchayati Raj election. Now, I would like to tell you all about my third part, equality of opportunity in matter of employment, that is Article 16. Friends, in our country, everyone has equal opportunity in any type of employment. In our nation, a chai wala can be a prime minister, a rickshaw puller son can be an IAS officer, and a ticket collector can be a superstar. And there are tons and tons of examples in front of us. Now I come to my fourth part that is very necessary for our nation. Abolition of untouchability. Article 17. Untouchability and forbid its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability considered to be an offense in our law. So this practice as it had developed historically in our country, so this part of me helped to cut untouchability from its root. Now it's time to come to my last but not the least part, that is abolition of title. Article 18. It prohibits the state citizen from conferring any type of title except military and academic distinction. That's it, guys. I hope my part has to play crucial role in the life of every citizen of India. Lastly, I would like to conclude with a wonderful quotation by Albert Einstein. That is, for God, we all are equally wise and equally foolish. Thank you and have a very wonderful day and happy Republic Day to all of you. Thank you. मैं शालू को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों के एक विशेष अंग को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से बतलाया। अधिकारों की किताब में एक और पन्नों पर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे अगले प्रतिभागी राज रोहित सिंह फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच को सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार के विषय में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Hello all, this is Raj Rohit, studying Rashtriya Kavi Ramdhari Singh, Begusarai. As we know, we live in India, which is the land of various people coming from diverse culture, but in the end, we all share the same values that in India. So there I am to give a speech on the topic culture and education rights. On the occasions of 23rd Republic Day in India. India is a vast land where we have a different race, language, culture, and caste. Indian people are united by race, language, and literacy. Geographically and proximately by history, religion, economics, and interested and culture unity. It is essential to protect the interest and identities of the minority
In such a country in India, culture and education right means the rights of all sections of society that shapes their culture or language. The right to constitutions of remains or fundamental rights. Indian society is composed of nature and diversity is very nature of it. If democracy should there are should be from us should be the efficiency of guarantees so the meaningful participation will become so that meaningful participation will possible. The matters of the constitution therefore the India is according to the calculation and plans. धन्यवाद राज रोहित का, जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में हम सभी के सामने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया और हम सभी को सुनने का मौका दिया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी है कुर्बान गंगो चमन के लिए, है कुर्बान गंगो चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। यही धरती यही गंगो चमन चाहता हूँ, यही धरती यही गंगो चमन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी को दावत देना चाहूँगा, जो कि तरुण कुमार चौधरी हैं ट्रिपली ब्रांच से, और उनका बैच 2K21 है। वो आए और अपने विचार को राइट टू फ्रीडम पे अपने विचार को व्यक्त करें हम सभी के सामने। First upon, good evening to all of you. It is respected teachers, honorable juries, delegates, my dear friends, and here present each and everybody. आप सबको मेरी तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मैं संविधान के 7 मौलिक अधिकार में से एक खास मौलिक अधिकार जो कि राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता करता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, किंतु 44वें संशोधन में एक स्वतंत्रता जो कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। आपका दांत बहुत दिख रहा है। उस अनुसार से वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा, भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। और छठा, व्यवसाय की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता जो कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अनुसार से किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी अपना विचार और अपना मत रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और यह स्वतंत्रता भी सीमित है, क्योंकि यदि यह स्वतंत्रता तब तक ही असीमित रहेगी जब तक कि इससे किसी के विचारों का हनन न हो रहा हो। और प्रेस भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। दूसरी स्वतंत्रता जो कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, इसके अनुसार आप किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी भी प्रदर्शन का, रैली का आयोजन भी कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता भी तभी तक असीमित है जब तक कि इसके द्वारा किसी को कोई तरह की क्षति न पहुंचती हो। तीसरी स्वतंत्रता जो कि समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत आप
कुछ लोग मिल करके एक समूह का निर्माण कर सकते हैं, एक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और संघ का भी निर्माण कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता आपको दी गई है। किंतु यदि आप इस स्वतंत्रता का लाभ उठा करके कोई षड्यंत्र रचते हैं, किसी तरह की लोगों को हानि पहुंचाते हैं, तो यह स्वतंत्रता भी आपकी सीमित की जा सकती है। चौथी भ्रमण की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत लोगों को भारत में किसी भी बिना प्रतिबंध के किसी भी स्थान पर भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अनुसार सभी भारत के नागरिक किसी भी जगह पर घूम फिर सकते हैं। ये और कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति मानव के इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। अगर किसी भी मानव के अधिकार का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। पांचवी जो स्वतंत्रता दी गई है निवास की, इसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी रहने का अधिकारी है। वह कहीं भी जाकर के रह सकता है, बस सकता है और अपना काम कर सकता है और सरकार या कोई भी व्यक्ति इसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती है। हाँ, 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में यह स्वतंत्रता नहीं थी, किंतु 5 अगस्त 1970 को धारा 370 के हटने से ही यह स्वतंत्रता जो वहां पे बाध्य थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। अंतिम स्वतंत्रता जो कि व्यवसाय की स्वतंत्रता है, इसके अनुसार सभी लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं और सरकार या कोई भी व्यक्ति इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है। राज्य साधारणतः किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यह स्वतंत्रता भी तब तक असीमित है जब तक कि आप अपने संवैधानिक रूप का ही पालन कर रहे हैं। यदि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आपकी यह स्वतंत्रता भी सीमित की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तरुण, आपने बहुत अच्छे से अपने मूल विचार व्यक्त किए हैं। अब मैं राम प्रवेश सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आकर हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करें। गुड आफ्टरनून। आप लोग को राइजर क्लब के तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किए हैं 73वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो भी आप राइट्स के बारे में बोल रहे थे, ये सभी को जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि हमारा इस देश में संवैधानिक राइट्स क्या है, और प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को जानना इसको जरूरी है, जिससे कि अपने राइट्स को कहीं भी उपयोग कर सकें और उनको समझ होनी चाहिए कि हमारा इस देश में क्या करने का राइट्स है और किस पर प्रतिबंध है। मैं इस टॉपिक को, बहुत ही सुंदर टॉपिक आप लोगों ने चुना है, इसके लिए सारे छात्र छात्राओं को पुनः मैं बधाई देता हूं और अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धर्म का बवंडर है पीछे पड़ा क्यों, कुछ लफ्ज सुन के पारा चढ़ा क्यों, इंसानियत से ही हर कौम जन्मा, तो मजहब इंसानियत से बड़ा क्यों। यह देश खुले आसमान की तरह है जहां स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह गगन में उड़ने वाली पक्षी की हर प्रजाति अपने पंखों को फैलाने के लिए स्वतंत्र है, उसी तरह से इस देश में हर व्यक्ति अपने धर्म और जाति के लिए स्वतंत्र है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अमन राज शर्मा, सिविल ब्रांच को धर्म की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, my respected teacher and student. First, we would like to honor our chief guest and thank them for coming here. I want to thank everyone who contributed to today's Republic Day function. I speak right to freedom of religion. Religion is a matter of belief of faith. The Constitution of India recognizes the fact how important religion is in the life of people of India and hence provide for the right to freedom of religion under Article 25 to Article 28. The Constitution of India is a secular model and provide that every person has right to freedom to choose and
participate his or her religion. In number of cases, the apex in Buddhism in India, there are religion law, and Goa is the only state to have a uniform civil code now as the Goa Civil Code. The Constitution support religion, which means the people of India so love and to different religion of the country. Thank you, ma'am and sir. Thank you, Aman. Religion is like a pair of shoes. Find one that fits for you, but don't make wear your shoes. Okay, our next participant, Tuti Kumari from 21 Triple E branch to share her thoughts on right against exploitation. Honorable Judges, respected chief guest, my opponents and my dear friends, very good evening to all. I wish you a very happy Republic Day. Thank you for having me. My name is Tuti Kumari and I am going to be speaking to you today about the right against exploitation. Before I start, I share with a poem of self-respect, self-written. ना कहो आज़ादी मिली बिन खड़क ताल है, ना कहो आज़ादी मिली बिन खड़क ताल है, अंग्रेजों ने अधेरी है कई इंसानी खाल, पूछ दिए सिंदूर भरे सुहागनों के भाल, हंसते हंसते फांसी झूले भारत के लाल। देखी कहाँ हमने गुलामी की ओर आते, देखी कहाँ हमने गुलामी की ओर आते, शहीदों पर बरसती कोरों की बरसाते, खेल लहू की होली तोड़ी माँ की बेरी, ना भूलो भारतवासी शहीदों की शहादतें। देखे हमने देखे नर्म बिछौने पर सुख सपने, अखंड भारत के देखे उन वीरों ने सपने, उठा हाथ तिरंगा जंगे मैदान खड़े जो, आजाद हो भारत जहाँ से लड़ गए वो। थिरकते कदम तुम्हारे फिल्मी गीतों पर, थिरकते कदम तुम्हारे फिल्मी गीतों पर, वंदे मातरम का गोली खाए सीने पर। अंग्रेज हुकूमत से जो बगावत ठानी थी, मन में क्रांति बाजुओं में खानी थी, जन्मभूमि का कर्ज जो उन्हें चुकाना था, भारती के भाल विजय तिलक लगाना था। थाम भगवत गीता हाथ तख्त पर चढ़ गए, देश की आन की खातिर सूली पर चढ़ गए। The right against exploitation allows Indian citizens to stand up against any kind of exploitation that he or she might be going through. This fundamental right is described in Constitution as Article 23 said the prohibition of traffic in human beings and forced labor, traffic in human beings and beggar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service, the state shall not make any discrimination or ground only of religion, race, caste or class or any of them. Article 24 said that prohibition of employment of children in factories etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. The right against exploitation given in Article 23 and 24 prohibits for two provisions, namely the abolition of trafficking in human beings and beggar, forced labor, and abolition of employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines. Child labor is considered a gross violation of the spirit and prohibition of the Constitution. Beggar practices in the past by landlords has been declared a crime and is punishable by have been added in our Constitution. For example, Article 14 states about our freedom to practice the freedom of race, caste, sex or place of birth. Article 15 states that no one will be discriminated against any citizen or on grounds of religion, race, caste, sex, place or any of them. Again, Article 16 provides equality of opportunity in the matters of public employment. Article 17 provides us the security against untouchability that is unfortunately still present in the many parts of our country. We must be feeling some of the instances also in our surrounding, and most importantly in the rural areas of our society. Article 18 provides us the security about the abolition of titles. So likewise, we are now very fortunate
that after these 73 years of our constitution, we are successfully enjoying and enjoying very much of our rights, but we are forgetting our duties in the shade of just fighting for our rights. So my last and ending words will be, while rejoicing our rights and not forgetting that, obviously for fighting our rights we must not forget our duties also. Jai Hind, Jai Bharat, and thank you seniors and the beloved honorable guests. Thank you. Thank you, Prince. Surely, equality is the soul of liberty. There is, in fact, no liberty without it. With this in mind, I invite Sunidhi Bharti from Tripoli to throw light upon cultural and educational rights. Sunidhi? Yes, ma'am. Yes, start. Good evening, one and all. First and foremost, we made tribute to all national heroes. Let's celebrate this day, long-lasting peace in our country. My all respected chief guests, seniors, and as well as my all pretty friends, I am truly an overjoyed to share my topic, that is cultural and educational rights. So, as far as I know, cultural and educational rights is nothing but the right of all sections of society that saves their culture, a script, and language. Friends, these both rights provided under the Article 29 and 30. These both articles support the individual's right to protect their distinct language, script, and culture, and as well as it furnishes protection against discrimination on the ground of religion, race, caste, and language. As we know that India is very vast country, it have large number of cultural varieties, and we can say India is a small bird. My dear friends, here I would like to talk about first cultural rights. Its first objective is this right is to that guarantee that the people and communities have an access to culture. People and communities have an access to culture. Like this right is human rights that aim at assuring enjoyment of culture and is component in condition of equality and human dignity. Likewise, now I would like to talk about educational rights that aim assuring enjoyment of culture and its component in condition of equality and human dignity. Likewise, now I would like to talk about educational rights. In a wider sense, education may describe all activities by which a human group transmit to its descendants a body of knowledge and skills. In this sense, education refers to the transmission to a subsequent generation of those skills proceeded by to perform task of living. So that's how I concluded my speech over here. And once again, I wish you very, very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू स्तुति। सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार के विषय में बताने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी चलते रहे, आजादी मिलने तक वे अंग्रेजों से लड़ते रहे, आजाद हिंद फौज बनाकर बोस लड़ते रहे, आजादी मिलने तक वे हमला करते रहे। हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देते हुए देश को आजाद कराया और संविधान के माध्यम से हर नागरिक को आजादी का जन्मसिद्ध अधिकार दिया। अब मैं ऋतु प्रिया फ्रॉम ट्रिपली ब्रांच को आजादी के अधिकारों के बारे में बताने के लिए बुलाना चाहूंगी। Good evening, ma'am and sir. Happy Republic Day to you all. Now I consider myself as right to freedom and discuss its rights and restrictions. Hello, I am right to freedom, also known as Article 19. I am the backbone of Indian Constitution. I am available for citizen and exercise in the oppose of state. All my powers are situated in my two hands, called 19 clause 1 and 19 clause 2 to 6. In one hand, I give 6 freedom to citizen to enjoy various liberties. On the other hand, I give right to the state to formulate various restrictions, so no one can take advantage of first one. Now I tell you about all the rights that I gave to the citizens. First is freedom of speech and expression, which is 19 clause 1. It covers right to receive, right to express, right to keep any communication secret, right to express one's view, right to remain silent, freedom of press and freedom of commercial advertisement. Freedom of speech and expression is not an absolute right.
State has power to limit this right through its restriction given in 19 Clause 2. And these reasonable restrictions are sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency या morality, contempt of court, deformation, incitement to an offence. The second is freedom of assembly, which is 19 Clause 1b. It states that all citizens has right to assemble peacefully or without arms. It is regulated by 19 Clause 3, which states that due to sovereignty and integrity and public order, state has power to curtail 19 Clause 1b. Next is freedom of association, which is 19 Clause 1c, which states that all citizens has right to make or take part in association and unions. It is regulated in 19 Clause 4. It states that state can make reasonable restriction due to sovereignty, integrity, public order or morality. Fourth one is freedom of movement, which is 19 Clause 1d. Its objective is to grow the feeling of nationality. It states that all Indian citizens can go wherever they like in Indian territory. For this freedom, two restrictions are provided in 19 Clause 5, which states that these rights can be curtailed for general public and scheduled tribe interests. Next is 19 Clause 1e, which is freedom of residence. Its aim is to remove internal barriers in India. It states that citizens are free to reside and settle anywhere within the territory of India. Freedom of movement and freedom of residence are always used together. That is the reason these two have same reasonable restrictions. The last one is freedom of profession, occupation, trade or business, which is 19 Clause 1g. It states that all Indian citizens has right to practice any trade, occupation and business. They don't need any proper caste or class. This freedom is regulated by 19 Clause 16, which states that for general public interest, state has power to make reasonable restriction and to establish state monopoly. This is all that I want to share with you all as Article 19. Thank you. शुक्रिया रितु प्रिया का, जो राइट टू फ्रीडम के बारे में अपने अंदाज में हम लोगों को इतने अच्छे से बातों को रखा और हम लोगों को समझने का मौका दिया। इसी कड़ी में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइन सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हम सबको, सबकी छत पर एक तिरंगा रहने दो, सबकी छत पर एक तिरंगा रहने दो। न हो कभी भी कोई गम बस हो इन बसात, न हो कभी भी कोई गम बस हो इन बसात, मौला कभी न देखे मेरा मुल्क इन्हितात, और है सरबकफ ज़मीने वतन के सभी सपूत, और है सरबकफ ज़मीने वतन के सभी सपूत, ए दुश्मने वतन तुझे लाजिम है एहतियात, ए दुश्मने वतन तुझे लाजिम है एहतियात। सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाहे गलत, सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाहे गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाहे गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब दावत देना चाहूँगा कुणाल कुमार को इस शेर के साथ कि वो बोले तो बातों से फूल झड़ता है, वो बोले तो बातों से फूल झड़ता है, चलो ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं। कुणाल कुमार आए और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक पे अपना व्यू रखें और हम लोग को सुनने का मौका दे। कुणाल कुमार। Hello sir, thank you for that beautiful quote. Hello everyone, thank you for having me. My name is Kunal Kumar and I am going to speak about right against exploitation. Right against exploitation is our fundamental right. It comes under Article 23. It protects both the citizens and the non-citizens against exploitation. This is a very concerning right.
The scope of Article 23 is very vast. I mean, right against exploitation comes and sorry for that. No, one second. Right against exploitation is vast and unlimited. It is not merely bigger, which is prohibited under this article. This article basically strikes at forced labor. Forced labor is a threat to our country. I mean, child labor, labor that does not pay, labor that force you to do something that you are unwilling to do. All these come under a type of exploitation. It may exist as it violates human dignity and opposes the basic human values. Hence, every form of forced labor is considered in right against exploitation, and institution can take action against it. Our institution can take action against this under the law of Article 23. No person shall be forced to provide labor or services against this. Even if it is mentioned under a contract, or you have signed some type of agreement, even then no one can be forced to do a labor. Hence, I would like to say a quote: child labor and poverty are completely related to each other. If you are looking to end the poverty of a child by making him work, then you will have both poverty and child labor at the end. Thus, by this line, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you, Kunal. Now let's head up to open table discussion. Now I hand over the mic to Anshu Priya and Brilliant Ambuj to carry on this discussion. आप सभी को देश के 73वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 2020 बैच के संगणक विज्ञान अभियांत्रिक विभाग के ब्रिलियंट अंबुज आप सभी को एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो इसके साथ ही मैं फर्स्ट जो टीम है, हमारा जो टेबल है, वो उसका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ टुवार्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है: श्वेता कुमारी फ्रॉम सिविल ब्रांच, अभिषेक कुमार फ्रॉम सिविल ब्रांच, सौरभ कुमार फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच एंड तरुण कुमार फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच। हेलो, am I audible? Yes, sir. Guys, if anyone is absent in your group, no problem. You can carry on discussion within yourself. No, ma'am. Everywhere is मतलब. Okay. हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए शुरू करिए। तो ये सब हमारे पहला मेरा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ टुवार्ड्स नेशन बिल्डिंग। श्वेता कुमारी फ्रॉम 21C, अभिषेक कुमार फ्रॉम 21C, सौरभ कुमार फ्रॉम मैकेनिकल एंड तरुण कुमार चौधरी फ्रॉम ट्रिपल ई। टेबल प्लीज कैरी ऑन। हेलो। Yes, Tarun, carry on, Tarun. यस मैम, हमारे ग्रुप में केवल हम ही दोनों को करना है डिस्कस। अगर सिर्फ आप दोनों प्रेजेंट है तो आप दोनों आपस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में युवा किस प्रकार से अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि युवा तो जो है युवा जो है आज की युवा वो रीढ़ है राष्ट्र के निर्माण में। आने वाला भविष्य जो है राष्ट्र का वो इन युवाओं के हाथ में है, और ये जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं राष्ट्र के विकास के योगदान में। श्वेता, सौरभ, अभिषेक, एनीवन हियर? यस सर। यस श्वेता, कैरी ऑन। सबसे पहले मेरी ओर से आप लोग को नमस्ते। मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहती हूँ, तो जहाँ पर गलती हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा।
मैं इसे पॉइंट वाइज समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटेलिजेंस ऑफ पीपुल affect the importance of a country. Okay. And second, all people together working for the country is nation building. Third, the future generation is an integral part of the country. Fourth, for a better future, giving importance to the youth is necessary. Fifth, the youth is the most active part of the country. Sixth, all sorts of creativity can be found if we look through the minds of the youth. 7. The development planning can be completed by the youth. 8. The destiny of the nation can be most affected and changed by the youth. 9th. It is essential to train your youth. 10. The involvement of youth in different session is essential. So thank you so much. तरुण, anything you wants to say? तरुण कुछ कहना चाहते हो? यस सर। हाँ, डिस्कशन टाइमिंग जो है वो 10 मिनट है। अगर आप लोग चाहते हैं डिस्कस करना, ठीक है, नहीं तो आप अपना कंक्लूजन बता सकते हैं नहीं लास्ट में, ठीक है। आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या हमें कंक्लूजन बता के एंड भी कर सकते हैं। मैम जैसे कि उन्होंने पूरा अपना शब्द अंग्रेजी में बताया तो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, टॉपिक के रिगार्डिंग? टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे लगा था कि जैसे कि ग्रुप डिस्कशन है तो जो है हम दोनों आपस में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हाँ युवाओं की क्या भूमिका है, मगर उन्होंने जो बताया तो हम उससे पूरी तरह से हम सहमत ही नहीं हो पाए कि उनका कहना क्या था, तो हम आगे क्या बता पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये टेबल को हम अभी क्लोज करते हैं। ओके मैम। अम्बुज। ओके, नाउ जिन आप दोनों ने जो कहा वो एक दर्शनीय थी और एक अच्छा था ये। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाएगा वो शीशा तलाश कर। तो bravery, courage and democracy. It's a day to celebrate the Constitution. India is a democratic nation and we all are enjoying the democratic rights in various ways. Although we are still an emerging nation, so it's our responsibility to become a better versions of ourselves to contribute in the progress of our country. Mitrani dhanya dhanyani, प्रजना नाम समत्तनिव, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ यह है कि मित्र, धन, संपत्ति, प्रजा ये सब बहुत ही जरूरी और अहम है हमारे लिए, लेकिन इन सब से ऊपर माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। थैंक यू। तो आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने सेकेंड टेबल को, जिसका विषय कुछ इस प्रकार है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज इंडियन डिफेंस सिस्टम, जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं स्तुति कुमारी फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच, गौरव कुमार फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच, प्रिंस कुमार फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच एंड प्रिंस कुमार फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच। Now start. Yes, sir. First of all, good evening, sir. Okay. And Keep happy going. Republic Day. Okay. Thank you. And happy Republic Day to all of my friends and my dear teachers. And very thank you to give opportunity to me to talk on how strong is Indian defense system. So now I will continue in Hindi. एंड आवर डिफेंस सिस्टम, मैं मानता हूं कि मैं अपना डिफेंस सिस्टम जो है अब एक बहुत बेहतर भविष्य और बहुत बेहतर फ्यूचर है। जैसे कि इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइल या फिर ये AK-203 ला रहा है, तो इससे बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। क्या कि
जो भी विकसित देश है या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है वो उनका एक डिफेंस भी बहुत अच्छा जीडीपी होता है। जैसे हम लोग का ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे लगभग $12 बिलियन का फायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत बेहतरीन है और हम लोग अभी ड्रोन को वो रोकने के लिए अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये पक्ष है। अगर कोई अब बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गौरव का पक्ष बहुत अच्छा है और उसकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। तो कुछ बातें मैं भी रखना चाहता हूँ, जैसे कि 73 वर्ष हो चुके हैं हमारे गणतंत्र के और सिमिलरली 75वीं सालगिरह हम अपने आज़ादी की मना रहे हैं। तो इस टाइम पे देश ने बहुत ट्रिमेंडस डेवलपमेंट देखा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बाकी नेशंस से तो वहां पे हमारा स्टैंड आउट कुछ पीछे नजर आता है, कुछ पीछे। Although we are very much ahead of the many of the nations on this planet, but still अगर हम कंपैरिजन करें अपने पास्ट वेलोरियस हिस्ट्री से, सो वी लैग अ बिट बिहाइंड। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस हमारे बगल में ही चाइना है। इन द डिकेड ऑफ 1980 in the leadership of Mao Zedong, how industrially that accelerated the development and growth was accelerated. That's only was due to the youth of that country, and that's what we need right now in the development of that defense system. Also we need youth only. That only DRDO, ISRO and many other organizations under the Ministry of Defense will know that will know meet our expectations of today's India, because we have in the competition so many other countries, those small countries, as we know that Israel, we still import so many defense systems from that small country. So what does it feel like? Do we feel proud upon that, or हमें ऐसा लगता है कि we have to be self reliant? तो ये तो ये थोड़ा ओवरव्यू हुआ। इसके आगे एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैंड ओवर माय माइक टू द स्तुति, माय नेक्स्ट मेंबर, and pardon for the participation and absence of my next partner, that is of the similar name, Prince Kumar, roll number 3. He is unable to participate. Pardon please. Okay, thank you. I agree both of him, and I would say that as we know that China has the strongest military force in the world, while India stands as number 4 according to a study released on Sunday by defense website Military Direct. The Indian Armed Forces are under the management of the Ministry of Defense of the Government of India. With a strength of 1.4 million active personnel, it is the world's second largest military force and has the world's largest volunteer army. It also has the third largest defense budget in the world. Then it's okay. बिल्कुल गौरव। मैं प्रिंस, मैं तो आपको जवाब देना चाहूंगा कि अगर बात करें हम इजराइल को तो हाँ वो डेफिनेटली हमसे आगे है। आयरन डोम सिस्टम है, उसके पास एंटी रॉकेट सिस्टम, बट हम भी कहीं उसके पीछे नहीं है। हमारे पास भी S-400 जैसे जैसे मिसाइल है। और जहां तक बात करें इजराइल और चाइना को, आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। नो इट्स, और ये अभी सर्विस में है, आपको पता होना चाहिए, आप अप टू डेट नहीं है तो ये बात आपको पता करना चाहिए। और जहां तक बात करें चाइना और इजराइल का, इजराइल को तो गोद लिया हुआ है अमेरिका। अमेरिका खुद कहता है कि अगर इजराइल पे अटैक तो अमेरिका पे अटैक। तो हम किसी से भीख में नहीं ले रहे हैं। तो हाँ हम जरूर थोड़े पीछे हैं, बट हाँ हम उस पर कम कर रहे हैं। और जहां तक बात है चाइना का, तो चाइना में अभी भी कम्युनिज्म है। तो हम एक ये गर्व से कहते हैं कि हम आज रिपब्लिक हैं और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ वहाँ वो थोड़ा सा आगे हैं, बट हम लोग उस पर कम कर रहे हैं। डेफिनेटली आगे इंडिया जाएगा और ये कभी ना कभी हम लोग भी उसके पैरेलल रहेंगे, बट अभी नहीं है। जरूर हाँ तो हमें ये कहना चाहूँगा कि ये भीख में कुछ नहीं मिला, सब कुछ मैनेज करके इंडिया बहुत आगे है। और अभी फिलहाल ये सिनेरियो 10 साल से तो बहुत अच्छा है। डिफेंस बजट अच्छा है, DRDO डेवलप कर रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा तो गौरव और स्तुति दोनों से मेरा ये सवाल है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं और हमें थोड़ा टाइम असाइंड है। थोड़ा प्लीज सीनियर्स, कैन वी हैव? Yes, what? How much time do we have left for the discussion?
It's Can 7. you can carry on for 5 minutes more? Okay, Stuti and Gaurav, we have still 5 minutes for the discussion, and this is not the debate that we have to cross cut the another one point. We are having Yes, a yes, of course, discussion. of course. How can an acceleration in our system can be happen? So let's discuss what can happen. What is the today's status of India's defense system? And I'm proud to announce that in our own group we have Gaurav Kumar. He would be knowing very much about our defense systems. So I would like to, very politely, please please spread some knowledge about that. हाँ जरूर। हाँ जरूर हम लोग कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी है, तो ये इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सप्लाई में या फिर कुछ चीजों में आर्मी के लिए। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा वो किया जाए तो सही रहेगा, इसको साइड करके और डायरेक्ट एक मिनिस्ट्री होना चाहिए जहाँ पे तीनों सेना का जो होता है। वो अभी तो रिसेंटली सीडीएस हमारे अपॉइंट हुए हैं, बट वो भी उतने कारगर शामिल नहीं हुए। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत की, वो भी हाल फिलहाल वो हो गए, तो शहीद हो गए, तो इसीलिए थोड़ा सा कम था। बट हाँ, हम लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं और करेंगे। और अभी डिफेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बजट बहुत अच्छा इंक्रीज किया गया है और हमारा गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। तो हमें नहीं लग रहा है कि अभी वो स्लाइटली कोई चेंज होना चाहिए बहुत ज्यादा कि इसको डिफेंस को लेकर। तो अभी जिस रास्ते पर है वो बहुत अच्छा है और ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। और हमें अगर विकसित बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो डेफिनेटली हमें डिफेंस पे ध्यान देना होगा और डिफेंस एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आज चाइना का बात करें, रसिया का बात करें या अमेरिका का बात करें, तो वो लोग का बहुत ज्यादा वो इनकम होता है वहाँ से डिफेंस से। तो वो जैसे अपने इक्विपमेंट को बेचते हैं अदर कंट्री को, तो उन्हें फायदा होता है। और हम लोग भी पहला अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस को देने जा रहे हैं और ये ऑन द वे है, लगभग अब हो चुका है। बस एक और डील बचा हुआ है, उसको करेंगे। और बहुत सारे देश अभी लाइन में, जैसे मिस्र है, इजिप्ट है और ब्रुनोई है, ब्राजील है, ये सब भी उसको डिमांड किया है। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे करेंगे और बहुत अच्छा वहाँ से डिफेंस का एक होगा। तो मुझे नहीं लगता है स्लाइटली अभी कोई चेंज होना चाहिए। अच्छा स्तुति, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि चेंज तो हुआ है बहुत कुछ इधर। जैसे कि पहले तो डिफेंस में गर्ल्स नहीं जाती थी और इधर से जाने लगी है। तो ये जो कर रही है हम डिफेंस सिस्टम, ये तो बहुत अच्छे कर रही है हम लोगों के लिए, और फिर और आने वाले समय में तो और बेहतर होगी। हाँ डेफिनेटली ये देश है डेमोक्रेटिक। आज हम डेमोक्रेसी का ही दिन है, तो यहाँ तो इक्वलिटी का बात होता है, तो लड़का और लड़की बराबर हैं। ये एनडीए में जाने का नया नया रूल आया है, सुप्रीम कोर्ट जो रूल दिया उसको बहुत सम्मान करते हैं। और हाँ, वो होना चाहिए, लड़की को भी डिफेंस में होना चाहिए। थोड़ा पहले इसको होना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ कुछ दिन पहले। चलो कोई बात नहीं, अब तो अच्छा हुआ। नहीं, आपके लिए ऑप्शन थे, आप सीडीएस देके ओटीए जा सकते थे। सिर्फ आपको अभी एनडीए नहीं जाना था। उसके लिए भी मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ता 3 साल, मतलब। और जैसे आप लोग के लिए ऑप्शन था कि 12th करके डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन हम लोग के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं था पहले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए एक पहले कमीशन नहीं करती है, वो भी पहले है, उसके बाद आईएमए भेजती है, ओटीए भेजती है, या फिर एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी भेजती है। तो आप एक सीनियर हो सकते हैं। कोई एनडीए पास करके 3 साल में जा रहा है, आप एपियरिंग में भर के आप अगर पहले बार में निकाल सकते हैं, तो हाँ, आप उससे पहले कमीशन और आप सीनियर हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई चेंज पहले होना चाहिए था, या भी बात इक्वल है और कहीं ना कहीं बेहतर है। बेहतर तो है, हाँ। तो और कोई हो, जैसे अभी आईएमए में अभी भी लड़की नहीं है, तो बट एक इंस्टीट्यूशन वैसा होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। एक लड़की के इस बार लिया गया गर्ल्स को, बहुत कम गर्ल्स को लिया गया है, ओनली 19 गर्ल्स को लिया गया है। तो थोड़ा इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। नहीं, ये अभी हम डिफेंस की जब बात करें तो डिफेंस में ये नहीं है, वैकेंसी नहीं होता है वहाँ पे। आप वो जितना उनका मन होगा वो वही लेंगे। अभी भी वो लोग कहते हैं, कोई भी ऑफिसर होता है आर्मी से तो उसे एसएसबी प्रोसीजर से गुजरना होता है, तो वो अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी डिफेंस में बहुत ज्यादा ऑफिसर का शॉर्टेज है।
तो वो उस लायक काबिल ऑफिसर उन्हें नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको जान के डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लड़की के साथ, कि आपको जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। हाँ, बॉयज को भी बहुत कम लिया जा रहा है, और इनफैक्ट 2 स्क्वाड्रन बढ़ा है उसके लिए एनडीए में। तो ये एक बहुत अच्छा डिमार्केबल वो है कि आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 2 स्क्वाड्रन बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग मतलब उतने हाँ, काबिल नहीं है, लेकिन हम लोग को तो काबिल बनाया जा सकता है ना, कि जैसे कि और सारे कंट्री में होता है, जैसे शुरू से ही उनको उसी चीज में लगाया जाता है, धीरे धीरे तो वो काबिल फिर बन जाते हैं। तो हम लोग को भी उनको तो ऐसा प्रिपेयर करना होगा ना, ताकि हम लोग भी काबिल बन सके। हाँ, जरूर जरूर आप काबिल जरूर बनिएगा, लेकिन अभी शुरुआती में डायरेक्ट आप वो गाछ के नीचे से चढ़िएगा। आपको पहले रूट पार करना होगा, स्टेम पार करना होगा, फिर आप ऊपर जाइएगा। तो डायरेक्ट कैसे ऊपर जाइएगा? तो धीरे धीरे होगा। और हमें जहां तक लग रहा है अभी, जैसे बिहार और वगैरह में जब हम डिफेंस फोर्सेज की बात करते हैं तो पूरा डिफेंस सिस्टम आता है। तो डिफेंस सिस्टम सिर्फ आर्मी अभी एयरफोर्स ही नहीं आता, उसके अंडर का भी आता है। तो यहाँ जो 35 रिजर्वेशन दे दिया गया, तो ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। काहे कि जब आप डिफेंस फोर्स की बात करते हैं, कोई भी अपने रिजर्वेशन इसलिए होना चाहिए था ताकि पहले लड़की लोग को कहीं कुछ करने का अवसर नहीं दिया जाता, तो बहुत पीछे थी, इसलिए उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था कि वो लोग कुछ करे, आगे निकले, इसीलिए उन लोगों को दिया गया है रिजर्वेशन। नहीं, आप बहुत हेलो समय की नजाकत को देखते हुए हमारा हम लोग अपने कंक्लूजन पे आ गए हैं सर, कि हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और कुछ स्लाइटली चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक ठीक है, ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है, तो इसे चलने देना चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। Wonderful, dear student. It was you guys really come with presentable ideas, and I agree. Defense and the new equipment is very necessary for the internal security, external security, and peace in our country. हाँ, और ये जो था कि लड़कियों को जो बढ़ने का मौका देना चाहिए, तो ये धीरे धीरे अब बढ़ता हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी, और ये अच्छी बात है और आगे भी होता रहेगा। तो मैं अब 2 लाइन कहना चाहूँगा इस पे कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोनों में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। Well said. Moving ahead, let's call the third team with the topic India then versus now. Along with the participants, Sunidhi Bharti of Electrical Department, Gaurav Kumar of Electrical Department, Vaibhav Kumar of Civil, and Aman Raj Sharma of Civil Department. Excuse me, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, yes. Yeah. Good afternoon to all my honorable guest teachers and my friend. Myself, Gaurav Singh from Sitamarhi. I am the student of RRSDCE in EEE department. I am going to discuss about the India then versus now. In ancient India, we have lack of economic, millions of poverty, we have none of nuclear powers, etc. Nowadays, we have built a modern economy, remained a democracy out of poverty, become a space and nuclear power, etc. India will present a picture of tremendous progress. That's all. Any other member? Can Aman Raj? Sunidhi? Yes, sir. Yeah. Yeah. If we talk about the history of India, we have lots of we have tremendous effect of history, like the number of system and the number of zero are the gift given by our Aryavat from the India to build to the world, and also the first university of world, that is Takshila, belongs to India, and Ayurveda, Sanskrit, Ayurveda, art of navigation, astronomy, trigonometry, calculus,
decimal system. Yeah, and these are the achievement of India in the history. And if we talk about the present scenario of the India, that India is the one of the most best countries to live in. That India India has the lots of tourist attractions in the world, and they have last means 1 year ago our cave is Shivan discovered the Chandrayaan 2 in a very less amount. That it was the 100 satellite in electricity is now in every house in the country. Um, that's all from my side. That's all. You will agree with my point. India, which present a picture of tremendous progress. It's not a debate, Gaurav. It's our To this discussion. we have to discuss about ancient and present India. Okay, Like that's you can all. speak in Hindi if you want. It's not compulsory to speak in English if you are not comfortable. Okay, ma'am. that's all. सिर्फ 2 मिनट बोले हैं आप लोग. Actually, sir, we do not prepare. Okay, That's no it. problem, no problem. ओके ओके Anshu? और दोनों ने अच्छा बोला। तो मैं इंडिया देन वर्सेस नाउ पे एक अपना 2 लाइन कहना चाहूँगा कि और मैं इस सॉरी चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो जलवा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो जलवा याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर पहुंची थी किनारे पर, आज़ादी किनारे पर, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। Let me present some words of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Courage to give, courage to think different, courage to invent, the courage to discover the impossible, courage to travel into an unexplored path, courage to share knowledge, the courage to remove pain, courage to reach the unreached, courage to combat problems, and the succeed are the qualities of the youth. और मैं आखिरी में बुलाना चाहूँगा लास्ट टेबल, जो हमारा इस इवेंट का सबसे लास्ट टेबल है। इस टेबल का जो विषय है वो विषय है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं सालू कुमारी फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच, कुणाल कुमार फ्रॉम सिविल ब्रांच, आकाश कुमार फ्रॉम सीएससी ब्रांच एंड राहुल राज फ्रॉम सिविल ब्रांच। Hello sir. Yeah, hello. Hello. Yeah, hello. Okay, sir. Now we can start now. Yeah, everyone presents? Yeah, everyone presents. Yes, everyone is present. Yeah, okay. Yeah, okay. Okay, well, first of all, a glorious namaskar to all of you on the behalf of my team. It is very auspicious day for all Indians because it's Republic Day. Hence, we all are assembled here to discuss about cultural diversity of our nation, India. I would like to start today's discussion with a quote that is very close to my heart. We are different, and this is the most beautiful thing about the diversity of India. Every culture defines its own story. The string of nationalism connect all the jewel of diversity into unified garland, and that is the beauty of our nation. Okay, well, believe in a country where a Catholic lady left her position for a Sikh Prime Minister, and a Sikh Prime Minister take oath from Muslim President, and in the Hindu majority nation, and that is the uniqueness of our nation. We used to speak various languages, yet we all are connected by heart. It can be feel by taking an example that South Indian movies, despite of language barrier, loved by many North Indian people. India is only country with large number of vernacular newspaper. It shows our unity in diversity. Yet there are some conflicts due to diversity,
that are stained for our glorious history. So guys, it's high time for us, as we are the future of India, to celebrate diversity with fraternity and enjoy every bit of flavor of our nation, either in the form of custom, travel destination, tradition, food, and trust me guys, there are tons of things to focus. Now I'd like to share my mic with my other teammates with by leaving a quotation which is also very close to my heart, and that is India, a country of diversity, diverse culture, diverse religion, diverse language, diverse food, yet we all are connected by heart. Thank you, and I would like to invite Akash for sharing his views on this topic. Akash. Hello everyone. I am going to start my topic, cultural diversity in India. India is the second most populated and seventh largest country of the world. It is the home of diverse culture. It is full of diversity as every state has its own culture. Culture is one of the greatest achievements of human beings, and it is this cultural heritage that distinguishes human from other animals. It comprises of customs, traditions, attitudes, values that control human behavior. Aristotle remarks that man by nature is a social animal. It means that human beings cannot live in isolation and need the company of other fellow for their survival. So human lives in a group and interact with each other, and that leads to formation of custom and culture. The diversity of India is endless and unique. It ranges from geographic features to demographic features to custom, religions, traditions, and languages. We can say that culture is the sum total of human achievements that are communicated from one generation to the other. Language is considered to be the vehicle of a culture, a medium which facilitates its transmission across generations. Modern world is culturally pluralist, and this plurality needs to be respected and celebrated. India has been known for its remarkable cultural diversity, owing to its multitude of ethnic origins, religions, and languages. Pluralistic character of Indian society evolved during the Vedic period. It was differential and was synthesis of Aryan and non-Aryan race, including tribal people. It was supplemented by the rise of Jainism and Buddhism, and was further reinforced during the early medieval period. Later on, with the invention of Muslim rulers, India witnessed the synthesis of Hinduism and Islamic tradition. With the Dutch, Portuguese, and British, the European culture traits also got mixed in Indian culture. Different communities thus have brought with them their specific cultural traits that got mixed, and a variety of distinct ideas and traditions started to coexist. India is a secular state and has no state religion, but there are followers from almost all major religions of the world. In spite of diversity, people live in harmony and celebrate their respective festivals with fervor and gaiety. In spite of such diversity, India is one, and that is why it is said that India truly represents unity in diversity. Thank you. Hello everyone, happy Republic Day. Yes, Salu, I agree with your point, and I want to enhance your point about the linguistic diversity. As we all know that, and it is proven that Indian beauty is Indian culture diversity is the true essence of beauty. It is always fascinating to see that how many peoples and with their different mentality and different diversity living together. As a fact, I want to tell you that in India there are almost 122 major languages and 1599 other languages. But amongst of all, Hindi language is most commonly used and most important language. But no matter what language we speak, what are our mother language, but the love and respect toward our nation is constant. As we all are engineers and we love science, there is a law that is known as conservation of energy. As there's a law that is known as conservation of energy. So
So according to this, I want to say that no matter what language or what culture we follow, our our love toward our nation is constant and it constant and kind of sorry. Well, Kunal, are you there? Yes, hello. I agree with all of them as they all spoke about uh, the Indian cultural diversity with many languages, religions, music, dance, foods, which differ from state to state, people to people. The Indian culture is an amalgamation of several cultures. Yes, India is a diverse country, as they all told you about it. Diverse, the various cultures, the diverse food, the diverse religions. People speak in different languages, dress differently, worship different gods. Uh, but there is a downside to cultural diversity. One of the main disadvantages of cultural diversity is its tendency to create language barriers. Social tension arises due to cultural diversity. Many riots occur due to differences. Everything has two sides, just like a coin. As I would like to say, we are still far too divided. Unity in diversity is still a distant dream, but we will overcome this and walk on a glorious path no matter what. Thank you. I would like to conclude this discussion with me. Well, Kunal, Rahul, and Akash, I think we all are agree with each other, right? Yes. Yes. So the conclusion, I think the conclusion is that the diversity in our country is good, but there are some conflicts. Yeah, but there are conflicts because it's a democratic country, and some of the people said earlier that India is like a mini world. So it is something like hard to handle the diversity in some cases, like because everything has two sides. Yeah, I agree. I totally agree with you. So, but if we talk about pros and cons, then a single line for this is pros overshadows the cons in this particular topic. So the conclusion is okay, na? So it's like a rainbow of lifestyle and beliefs, and diversity gives us so much advantages, and there are some little bit disadvantages, and we can neglect them, and not really neglect them. We have to work on that, as we are the backbone of our society. Don't you think? Yes. And it's our duty to enhance the diversity and propagate fraternity among ourselves. Okay. Thank you. It was a really impressive performance. And I totally agree with this. Unity in diversity. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. This binds us in togetherness. And I would like to quote one quotation from Sardar Patel. He said, "Every Indian should now forget that he is a Rajput, a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian." And I would also like to say that we just completed this event on a very beautiful note. Let me call my co-host to end the program with a patriotic vibe. Thank you. मैं कल्चरल डाइवर्सिटी पर बस 2 लाइन कहना चाहूँगा। ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम सिख ईसाई हैं, एक हमारी जाति है और हम सब भाई भाई हैं। और इसी के साथ हमारा आज का इवेंट बहुत ही अच्छे तरह से चला, जिसमें कि 2 इवेंट हुए थे। स्पीच का इवेंट था, एक फैंसी स्पीच इवेंट, एंड एक दूसरा था टेबल डिस्कशन इवेंट, जिसमें सभी ने अच्छे से भागीदारी अपना निभाया और सही इसको पूर्ण किया। मैं इस पे सबसे पहले अपने टीचर्स को, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रिंसिपल सर, मैं उनसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि आज का हमारा जो डिस्कशन था या फिर हमारा स्पीच राउंड था वो किस तरह का रहा, वो आकर हमें बताएंगे।
Hello everybody. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा. I appreciate you all, especially the first year, all first year students who have participated in this program. I would like the such thing. I very much appreciate this kind of conversation and speeches. Very good, very good. Carry on such kind of this gathering. Number one, number two, ये तुम्हारा जो डिस्कशन हुआ ना, डिस्कशन वो डिस्कशन अच्छा था. टेबल 2 का डिस्कशन हमको अच्छा लगा, और स्पेशली मिस्टर गौरव अच्छा पॉइंट रेज किया वो, दैट चाइना इज a communist country and we are not a communist country, so that is the basic difference why we are lacking behind to China. This is very good point. Or overall, all the participants, I must congratulate everybody, and I would like to thank the especially Surabhi, Ambuj, Anupma, Abuzar, Faruqi. Your effort is very good, and in future I would like to such program I would like to see offline. Okay. Yes sir, for sure. ये बहुत अच्छा है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है. इस तरह का चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है. एकेडमिक हो जो तुम्हारा इम्प्रूव करे, तुम्हारे क्वालिटी को इम्प्रूव करे, डिस्कशन वगैरह अच्छे से हो. दिस इज वेरी गुड. सर हम लोग राइजर्स इसीलिए ही बनाए कि हम लोग नहीं बहुत अच्छा. हम तुम आए थे उस दिन चैम्बर में, तो हमको बता रहे थे. उस दिन हमको नहीं समझ उतना आया था, बट हमको अच्छा लगा आज. I enjoyed every moment. I enjoyed every moment. Yes, yes. सर इससे पहले भी हम लोग 1-2 इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, डिबेट कंपटीशन टाइप का था काइंड ऑफ, उसी से हम लोग स्टार्ट किए थे. ये आज हमारा सेकंड इवेंट था. वेरी गुड, वेरी गुड. हमको अच्छा लगा हमको, और हम तुम लोगों से और बात करेंगे इसमें, और हम हाउ कैन वी इम्प्रूव, इसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं. यस सर, हम बात करेंगे. जो भी जो ऑर्गेनाइजर हो, तुम लोग आओ जब कॉलेज खुलता है फिर, है ना, हम लोग बैठ के बात करेंगे, और उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं. अगले मैंने और मैंने नेक्स्ट लेवल पे लेवल. यस यस यस. हाँ, लेवल हाई करना चाहते हैं हम इसका. और हम तुम्हारे साथ हैं. इस तरह के कामों में हम तुम लोगों के साथ हैं. ओके ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. पूरे राइजर की तरफ से थैंक यू, आप यहाँ आए. नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको. थैंक यू ऑल. यस सर. नेक्स्ट व्यू हम राम प्रवेश सर से लेना चाहेंगे कि राम प्रवेश सर का क्या ओपिनियन रहा इस पूरे इवेंट का. राम प्रवेश सर. हेलो सर. राम प्रवेश सर. हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. हाँ, पूरे टीम को जिस तरह से आपने सेशन को सक्सेसफुली ड्राइव किया, इसके लिए मैं सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. और इस तरह का हमेशा होते रहना चाहिए डिबेट, जिससे कि हर आदमी को अपना, चाहे हर बच्चे को अपना जो एबिलिटी है वो सामने रखने का मौका मिलता है. इसलिए खास करके अंबुज हमसे बात किया था इसमें, और उसको बोले थे कि तुम ये सारे ऑर्गेनाइज करो, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आज का जो डिबेट था उसको फुली मैंने सुना. हमको ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का ये जो अपना ओन थॉट था, ओन उनका जो स्पीच था, वो बहुत ही अच्छा लगा. और मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि यू आर ऑल आर डेडिकेटेड फॉर नेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. आप लोग को इस तरह का सेशन कीजिए. जो भी कॉलेज के तरफ से सर को मेरे द्वारा हम कह करके सारे चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराएंगे. ये मेरा कमिटमेंट है.
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स ऑल। वंदे मातरम से अब हम इस सेशन को एंड करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलं मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुलकुसुमिति दुर्मदल शोभिनी सुभासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।